Hello, and good morning, everyone, and welcome to this first introductory session of ATX Advanced Taxation of your ACCA qualification. So, today we are going to look at it why you should be choosing ATX as your one of optional paper and what are the resources that I can make available to you that so that you can easily pass it out in the very first attempt. Okay, and what is the paper structure, what is the syllabus, what are the pass rates. So this important things before even starting out our actual course, right? We need to understand it how is the ATX exam. Okay, so let me share my screen first of all. Okay. So in the screen, you will firstly see that I have created a Excel file. This Excel files are different for each and every topic. I have made it available to you so that you can revise accordingly throughout the session as we cover each and every topic. And at the end also, whenever you are going to examination, you might need to recall some topics so you can directly jump on it without having need to find a particular topic or a session, right? And I have made it interactive. Okay, first let me show it out one of my Excel sheet. Okay, done. So this is how I have covered it. I have used reference from ACCA Study Hub. Yes, I have used ACCA Study Hub for creating this Excel sheet. Okay, so this is how we are going to cover it. Uh, Okay, so this is like we have created various flow charts to make you understand things better. So when we talk about living accommodation, we have on the left hand side, you have flow charts and all the explanation that you are going to need. Then, okay, and in the right hand side, you have got the examples. Some of the most of the examples, right? We would do it together while we are in the session live. We are going to do this so that you understand uh, each and every topic with an example. You get a practical example for it, and also we have taken some of the question from Study Hub. I have self-made some of the questions. Okay, so whenever you go through each and every topic, you get an example, you get a question. If you solve it out, so firstly you understand those things. When you solve it out, you can know how confident you are, right? Okay, so this is how it looks like. We are going to see all these things in detail. I just wanted to show you how it appears to you and how it is going to help you out throughout this ATX journey. Then I'm still left out with most of the things. I have just started out it. Since you I would be getting for the ATX examination for just not June. Okay. We are not going to study those things, study ATX. I'm not going to take sessions considering the June examination. I'm not considering June attempt. I'm considering out the attempt after June. From September onwards, we would have regular sessions going on, right? We would start out our major courses because I don't think so that for a month you you would be able to cover all these things because it is a broad thing, right? It would take you time, and also it would take me time to make all these resources for you. And I want to do the best for you so that you can excel in your very first attempt. Done? Okay, so let me start with the introduction. Done. So let me tell you about me. Done. My name is Harsh Gwalani and I am an ACCA affiliate. Okay, uh, I have hands-on experience in UK accounting, so I know the practical application of this tax laws. Okay, so I can guide it better for you, this paper, right? So I have chosen this paper for you for starting out with my tutoring journey. Okay, done. Right.
Okay, so this paper comes out from your professional exam, right? Then, so the subject is advanced taxation. As you know, it is one of the optional paper. Okay, so one of the thing that I would say, still you would not have started out your paper whatever you say, the syllabus, right? You would not have started out the syllabus. So firstly, I would say at least decide what you want to do ahead in your future. Okay. ACCA provides you flexibility that you can choose any two optional paper, any two paper out of the four options, right? We have APM, we have AFM, we have AAA, we have ATX. So out of this four, you can choose out two, but it should be totally dependent on your career goals, right? If you want to pursue career in audit and assurance, right? It is a big industry. Okay, big fours do hire in bulk for assurance, right? And the pay packages are also very good. Okay. But let's say you want to go into finance. Okay. So advanced financial management can be your choice. ATX should not be chosen up by you just for the sake of the percentage, the past percentage it holds out, right? Okay. This should not be a criteria, right? Okay, you might say that it has a good passing rate among all these optional papers, so I'm going to choose it. No, you are doing a blunder, right? This should chosen just if you have interest in making your career in taxation, right? Because it is a very wide topic, very much things you need to cover it out. It is a very broad paper, right? So the thing is that you should take a decision, right? You should take a decision now before even starting out. I am saying it, right? If you are not interested in taxation, okay, no one is forcing you to choose this optional paper. And if you are choosing it, you need to have some commitment towards it. Okay, you cannot take it lightly because considering the pass rates, right? It should be taken totally based on your interest. And again, telling it to you, do not make the mistake. Okay. So the version, it is a UK version. We are going to uh, cover the syllabus for ATX UK version, right? Okay. So many students have this problem that they have got six exemption or nine exemption. So what the thing is that they might face difficulty while we are teaching about the advanced taxation paper while we cover out the syllabus. But I don't think so. You need to face any fear regarding that because we are going to cover any topic which is in this ATX course from basics, right? We are going to take it from basics to the advanced level. Done? Okay. So you do not need to worry about it. The applicability of this course is June 25 to March 26. And as I have told you firstly, that I am not going to cover the syllabus for the June 2025 attempt, right? We are going to start it out our journey. Okay, if you are planning to give on September, starting from September, if you are planning to give September examination, then we are with you. Then okay, for 25-26 examination, you would be studying Finance Act 2024. Done? Okay. And the study material, right? So, as I told you earlier, we have used study material as ACCA Study Hub as one of our resources. The reason behind not choosing Kaplan Study Kit is because I think Study Hub as a better resources, and also it is an official hub for studying for ACCA papers. I think the changes and various new things get introduced and implemented in this study hub much more earlier than any other learning partner. And recently I thought it has also been discontinued. Kaplan
has also been discontinued from the learning partner, right? I do not remember it, but I think, yeah, that I heard about that news. So I think ACCA Study Hub is the most relevant thing that you should study. Okay. But when you go to practice things, right? When we cover out whole syllabus, okay, when we cover our whole syllabus, then you want to practice. Okay, so you get an idea how your examination questions would look like. So that, for that, we would be using Kaplan exam kit for exam kit solution. Then, because we have, when we go to ACCA Study Hub, you do not have that much detailed exam type questions there. Okay. So I would be referring Kaplan exam kit. We would be doing some questions together, and I would be giving some questions to you to do it by self. And this is what it would look like. Okay. So long story short, we are going to check out the resources. We are going to cover the syllabus from ACCA Study Hub, and we are going to solve questions from Kaplan Exam Kit. You can use Study Hub for flashcards and other things, so that you have advantage of covering topics in short. Then it is very interactive. Recently, ACCA made uh, very much changes into the study material, and they are trying to attract students and get them study directly through ACCA Study Hub instead of any other learning partner like Kaplan and VPP. Okay, so the difficulty level is moderate, right? I would not say easy. If easy was a thing that you would ask me, then I would say to give SBL. SBL is one of the easiest paper according to me, despite the fees it has, right? The fees has skyrocketed for all the ACCA papers. Okay, so it is not easy. It is not as difficult because as you learn out the text provision, you practice things, then it isn't as difficult as you think. But it is not short. It is broad. You have to learn out various things. Next is duration of examination. It is normal 3 hours and 15 minutes examination. The total marks are 100, as you already know. You need 50 marks to pass it out. You need 50 marks to get a pass. The pass rate varies around 45 percentage to 52 percentage. Okay. The recent quarter has the best pass rate. It was 52 percentage, right? So more than, okay, it is more than the ratio of one people passing out of two people appearing for the examination. So I think it is a good pass rate as compared to others. Okay, so ATX is, I think, kind to you. If you look out at other subjects like advanced audit, APM, and AFM, the pass rate relatively is lower than ATX. For AAA, I think it is around 39 or 40 percentage in recent quarter. So I think uh, ATX is a good paper to score good marks on, right? You can gain a rank, you can get a good rank if you take it seriously. The paper pattern, let me show you. Okay, how this 100 marks is bifurcated. So for 100 mark, you need to have a 150 marker question, 150 marker question, and 225 marker questions, right? आपको दो 25 मार्क क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, राइट? सो कितना हुआ? 50 और 25, 25 हो गया आपका 100 मार्क्स. बट इसमें चीज क्या है ना, ये जो 50 मार्क है ना, दिस 50 मार्क, for this 50 mark you have 40 mark of technical things. In this technical also you have compulsorily 5 marks for ethics, right? You
may have done ethics in beforehand in other examination, but we are going to cover it from the scratch again. Okay, it is an easy mark. एसीसी ऐसे परोस के देता है कि भाई ले लो, ठीक है, क्योंकि इतना ज्यादा एथिक्स में उनके पास वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस नहीं दे सकते, ठीक है। कुछ एक स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है, आई वुड नॉट से कि भाई वही चीजें आती है रेप्लिकेट करती है, बट एथिक्स में इतना ज्यादा तोड़ मरोड़ नहीं सकते, तो आई थिंक इट इज अ इजी इजी 5 मार्क, राइट। एंड 40 में से जो 35 मार्क्स है ना, वो आपको किसके मिलेंगे, वो आपको जो भी रेलेवेंट टॉपिक्स है उसके मिल जाएंगे, ठीक है। सो 35 ये हो गया 40 मार्क, और 10 मार्क आपको मिल जाएंगे प्रोफेशनल, ठीक है। अब प्रोफेशनल में आपकी ड्राफ्टिंग स्किल्स देखी जाएगी, ठीक है। आपको अगर मेल लिखने को बोलेंगे, क्योंकि आप यहाँ पर एक रियल वर्ल्ड एग्जामिनेशन दे रहे हो, ठीक है, ऐसा ही समझो, ठीक है। तो उसमें क्या होगा ना, आपको जैसे बोला जाएगा कि आप एक टैक्स एडवाइजर हो, आप एक टैक्स एडवाइजर हो, तो आप अपने क्लाइंट को किस तरह से एडवाइस देंगे, ठीक है। तो उसमें आपको ऐसा बोला जा सकता है कि भाई उनको मेल लिख दीजिए, क्लाइंट को मेल करिए, ठीक है, और कोई और फॉर्मेट हो सकता है। सो यू हैव टू बी वेरी गुड विथ फॉर्मेट्स, दे रियली आर वेरी गुड attention taker from examiner. Okay, they like it very well when you draw a format out, right? If you for at least professional examinations, okay. सो उसमें 10 मार्क्स जो है आपको प्रोफेशनल मार्क्स मिल जाएंगे, जिसमें क्या क्या चीजें आ जाती है, आप कम्युनिकेट किस तरह से करते हो, आपने प्रेजेंट किस तरह से किया है चीजों को, ठीक है, आप प्रोफेशनलिज्म कितना मेंटेन कर रहे हो। ओके, सो अभी डिटेल में बात करने की जरूरत नहीं है, वी आर गोइंग टू कवर इट अहेड कि आप इस प्रोफेशनल मार्क्स को किस तरह से इजीली अपनी जेब में डाल के लेके जा सकते हैं। डन। नेक्स्ट इज 25 मार्कर। अब ये जो 25 मार्कर है ना, इसमें क्या होगा ना, आपको 20 मार्क मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन की बात करो, 20 मार्क मिल जाएंगे आपको टेक्निकल टॉपिक्स के लिए, और अगेन 5 मार्क आपको मिल जाएंगे किस चीज के लिए, 5 मार्क्स फॉर प्रोफेशनल, नॉट फॉर गुड हैंड राइटिंग, ठीक है। इट इज फॉर प्रोफेशनल स्किल्स, हाउ यू डेमोन्स्ट्रेट योर प्रोफेशनल स्किल्स। ओके, सो दिस इज हाउ your paper pattern looks like. ओके, सो अब हम बात कर ही रहे हैं, तो एक बार आपको एक एग्जाम क्वेश्चन किस तरह से होगा यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन का, वो एक बार बता देता हूँ, ठीक है। हम पहुंच गए हैं प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म में। यहाँ पे आपको, ये तो आपको पता ही होगा कि आप किस तरह से एक्सेस कर रहे हो, आप प्रोफेशनल लेवल लेवल पे पहुंच चुके हो, ठीक है। सो whenever you click assign, it would assign. I'm going to fast exam library. I went to fast exam library, and now we are clicking to one of the attempt, ATX UK December 23 attempt, right? We have June 24 attempt. Let's say I have assigned 2, right? So it would appear here. You might need to refresh this thing out. Okay. Okay. So as you can see, you have 2 papers here. Let's say I'm going to start it out. This is very boring thing. This is really boring, bro. Let's start it. See, 50 marks. Push section A, ठीक है। ओके, सो दिस इज हाउ योर 50 मार्कर क्वेश्चन लुक्स लाइक, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा जो भी आपका सिनेरियो है और आपको एग्जिबिट के बारे में चीजें बताई जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट देखने को मिल जाएगी कि किस चीज के आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे है ना, रिस्पॉन्ड टू इंस्ट्रक्शन इन द ईमेल फ्रॉम योर मैनेजर, ठीक है, राइट। सो आपको रिस्पॉन्ड करना है प्रोफेशनली, ठीक है, चीजें ड्राफ्ट करनी पड़ेगी आपको। तो 40 मार्क ये आ गए आपके, 10 मार्क ये आ गए। अब ये जो स्प्लिट है ना, आपको कहाँ पे देखने को मिल जाएगा, वर्क टू बी कैरिड आउट में, ठीक है। ये सारे सेक्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। बहुत ही ज्यादा आपको डर लग रहा होगा, इतना बड़ा क्वेश्चन है, बट बिलीव मी इतना हार्ड नहीं है, ठीक है। एक बार आप सिलेबस कर देंगे, हम साथ में 1-2 मॉक
खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया आ जाए कि आप रियल वर्ल्ड एग्जामिनेशन में किस तरह से चीजें करने वाले हैं। ठीक है। सो ये यहाँ पे आपके एग्जिबिट्स मिल जाएंगे आपको। ठीक है। एग्जिबिट रेफर करेंगे आप जब भी एक एक क्वेश्चन कंसिडर करेंगे आप तो। ठीक है। आपके पास रिस्पॉन्स ऑप्शन में दो चीज आती है, एक आपका है स्प्रेडशीट है, एक है वर्ड प्रोसेसर। अब मोस्टली प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में आपको स्प्रेडशीट का कम यूज होता हुआ दिखेगा। ठीक है। they are they are more into your skills of how you communicate things and how you grasp things out and how you implement it. Okay. How you interpret it, I got the right word now. How you interpret it, right? So they want to show you to check your interpretation skill इंस्टेड ऑफ योर कैलकुलेशन। कैलकुलेशन आपका नॉलेज लेवल और स्किल लेवल पे आपका टेस्ट कर दिया, तभी आप यहाँ तक आए हो एमसीक्यू पास करते करते। ठीक है। बट यहाँ पे जो है ना, आपको मोर एम्फेसिस देना पड़ेगा वर्ड प्रोसेसर को, राइट। ठीक है। तो ये अभी के लिए हम देख लिया हमने कि किस तरह से यहाँ पे आपका एग्जाम क्वेश्चन दिखे। ठीक है। ओके, लेट मी मूव। ओके, लेट मी चेक इफ आई एम मिसिंग आउट एनीथिंग। ओके। Okay, the thing is that other thing I want to say is, if you are a working professional, okay, we have designed this course such that it would be easy, because आप अगर फुल टाइम काम कर रहे हो, ठीक है, तो आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलता है एग्जाम प्रैक्टिस के लिए। आपको सिलेबस कवर करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं मिल पाता है, आपको वीकेंड से मिलता है। तो डू नॉट वरी, वी आर गोइंग टू टेक आउट वीकेंड सेशंस ओनली। ठीक है। और जो यहाँ पे फुल टाइम स्टूडेंट्स है, उनको मैं यही कहूंगा कि भाई, यू हैव नो एक्सक्यूजेस टू मेक, राइट। यू हैव टू डू इट ऑल फॉर पासिंग दिस एग्जामिनेशन। ठीक है। आपको यहाँ पे कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। यू हैव टू गिव इट ऑल फॉर दिस एग्जामिनेशन, राइट। यू कैन गेट अ रैंक इफ यू आर डेडिकेटेड इनफ। ओके। सो नेक्स्ट थिंग इज, हाउ does the syllabus looks like? So what is covered under ATX UK? What is covered under it? तो मैंने उसको 6 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, नेमली टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल, जहां पे हम देखेंगे इनकम टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। बेसिस ऑफ असेसमेंट, जो वेरियस टाइप ऑफ इनकम इसमें होती है, प्रॉपर्टी इनकम, एम्प्लॉयमेंट इनकम, पेंशन इनकम, इन्वेस्टमेंट इनकम, और उसके ओवरसीज एस्पेक्ट। ओवरसीज एस्पेक्ट यहाँ पे शायद आपने टीएक्स में कवर ना किए हो। ठीक है। और नेक्स्ट है कॉरपोरेशन टैक्स। कॉरपोरेशन टैक्स में भी आपको एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट देखने मिल जाएगा, टैक्सेबल टोटल प्रॉफिट्स में क्या क्या आता है, आपको लॉस रिलीफ कैसे मिलेगी, ग्रुप्स एंड कंसोर्शिया, है ना। ये कुछ एक टॉपिक जो है ना, ये आपको डिटेल में देखने मिल जाएंगे। टैक्स प्लानिंग एस्पेक्ट है ना, वो आपको मोस्ट ऑफ द चीज में देखने को मिल जाता है। ठीक है। बिकॉज आप जब भी रियल वर्ल्ड में आप एक जॉब में जाएंगे, ठीक है, जब भी आप जॉब करेंगे, या लेट से आप खुद का बिजनेस खोल रहे हैं, राइट, तो कैलकुलेशन एक बड़ा पार्ट नहीं है। मेन चीज है कि आप क्लाइंट का पैसा लीगली किस तरह से, विथ इन द प्रोविजन, आप किस तरह से बचा सकते हो, राइट। ठीक है। तो मेन चीज वो आती है, आपके पास रिसोर्सेज सारे अवेलेबल होगी। इसीलिए ना एसीसीए जो है ना, ज्यादा जोर किस पे देता है कि भाई आप इंटरप्रेट किस तरह से करते हो, इंटरप्रेट किस तरह से करते हो, राइट। बिकॉज ये है ना, आपको हर बार चीजें आपको परोस के दे देता है जो भी आपको एग्जामिनेशन के लिए नेसेसरी है। जैसे कि आपको रेट्स एंड अलावेंसेस जो भी है, जो भी टैक्स टेबल है, वो मैं आपको बता देता हूँ, आपको ये एग्जाम में इजीली दिए जाते हैं। ठीक है। ओके, जैसे कि ये 25-26 का टैक्स रेट है, पूरा आपको मटेरियल दे देंगे कि भाई आपको हमेशा इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी। अभी चैट जीपीटी का जमाना है। ठीक है। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आप उससे पूछ लोगे कि क्या चीज है, आपको रेट्स भी सब मिल जाएंगे इजीली। तो आपको मेन चीज क्या है ना, कि भाई आपको चीजें समझनी है, टैक्स प्लानिंग करनी है,
राइट, उसको ड्राफ्ट करना है। तो ये सब चीजें आपको ज्यादा ध्यान देनी है, ना कि आपको 10th 12th जैसे यहाँ पे चीजें रटने की है कि भाई ये 20% है, 40% रेट है, मेरे को ये याद रखना पड़ेगा इतने बैंड में क्या है। ऑल्दो कभी कभी इंटरव्यू में आपको जरूरत पड़ जाती है, बट एज यू गो थ्रू द कोर्स, क्योंकि आप 3 महीने की इस लंबी जर्नी में आपको ये सब चीजें याद रह ही जाती, ठीक है। बट ये है ना कि भाई आपको इसकी टेंशन नहीं है कि भाई मेरे को ये भी याद करना है। आपको याद क्या करना है कि चीजों को इम्प्लीमेंट किस तरह से करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको पेंशन लिमिट्स, कैपिटल अलाउंस रेट्स, कॉरपोरेशन टैक्स रेट क्या है, स्टैम्प ड्यूटी के रेट क्या है, ठीक है, सबके रेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये सब चीजों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एसीसीए यहाँ पे आपके ये जो बेसिक चीजें है ना वो ध्यान रखता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई आपको एक एक चीज याद रखनी पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट है तो टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कॉरपोरेशन टैक्स, ये दो मेजर ब्रांच है, दो मेजर ब्रांच है आपके एटीएक्स के इस बड़े झाड़ की, राइट। एंड नेक्स्ट इज इनहेरिटेंस टैक्स, जहां पे आपको रिलीव्स देखने को मिल जाएंगे, लाइफ टाइम आईएचटी क्या होता है, डेथ आईएचटी क्या होता है, ये भी हम देखेंगे। डेथ एस्टेट ऑन द डेथ, whatever the fund that an individual accumulates, the assets that the individual has, how we are going to use it out, right? How we are going to calculate the tax on that. So ये सब आपको कवर होती हुई दिख जाएगी। वैट जो है आपका इनडायरेक्ट टैक्स है, वैट जो है वैल्यू एडेड टैक्स जो है ये आपका इनडायरेक्ट टैक्स है यूके में। ओके, यहाँ पे आपको वैट रजिस्ट्रेशन देखने को मिल जाएगा कि कब आप रजिस्टर कराएंगे, कब आपका वैट डी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आप एलिजिबल होंगे, राइट। कितने तरह की वैट स्कीम्स है, जैसे कि कैश अकाउंटिंग स्कीम है, फ्लैट रेट स्कीम है ना। तो ये सब हम डिटेल में कवर करेंगे। कैपिटल गुड स्कीम क्या है, अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस के बारे में हम देखेंगे, जहाँ पे कैपिटल अलाउंस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है। अब लॉस रिलीफ आपको सबके अंदर अलग अलग देखने मिल जाएगी, है ना, क्योंकि अगर इंडिविजुअल्स है उसके लिए अलग रहेगा, कॉर्पोरेट्स है उसके लिए यहाँ पे लॉस रिलीफ आप किस तरह से लेंगे वो अलग रहेगा। ओके, सिमिलरली यहाँ पे कैपिटल गेन्स टैक्स, जो भी आपको कैपिटल गेन होता है ना, एसेट्स, शेयर, सिक्योरिटीज, ये सब बेचने से आपको जो भी कैपिटल गेन या लॉस होता है, ये सब चीजें हम यहाँ पे कवर करेंगे। उसमें आपको 9 रिलीफ्स देखने को मिल जाएंगे। अब ये जो 9 रिलीफ है ना, उसमें से आई गारंटी यू, नहीं छोड़ो भाई, गारंटी एसीसीए भाई बिल्कुल भी यहाँ पे प्रेडिक्टेबल नहीं है, बट ऐसा देखा गया है कि मोस्ट एग्जामिनेशन सेशन में आपको एक रिलीफ तो टेस्ट होती ही होती है, ठीक है। तो ये रिलीव्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरे है ना, ये 6 मेजर ब्रांच अपने ने देख लिए। एक और है जो छोटी छोटी चीजें हैं हम देखने वाले हैं, जो कि है टैक्सेशन ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट का टैक्सेशन किस तरह से होता है, फैमिली कंपनीज, एथिक्स एंड प्रोफेशनल, जैसा कि मैंने बोला। और एग्जामिनेशन को अप्रोच किस तरह से करेंगे, जैसा कि मैंने बोला, एक दो मॉक हम खुद साथ में सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि भाई आपको इस एग्जाम को अप्रोच कैसे करना है। ओके, so this was our motto for today, where we looked at out various things. So for the next session, we are going to cover our study approach, the exam plan, okay, in the next session. So as of now, I'm going to take leave. Thank you for attending this session, and very nice to start it out the journey with you. ओके, और दूसरा लास्ट थिंग मेरे को ये बात करनी थी कि भाई हम किस तरह से यहाँ पे लैंग्वेज हमारी क्या रहेगी। सो इट वुड बी इंग्लिश, ठीक है। बिकॉज इंग्लिश इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे जाके आपको जब क्लाइंट कम्युनिकेशन करोगे, ठीक है, तो आपको इंग्लिश ज्यादा काम आएगी, है ना। हिंदी इसलिए है क्योंकि मेरे को यहाँ पे समझाने में ज्यादा बेहतर होगा, है ना, क्योंकि इंग्लिश में आप डायरेक्टली रीड कर सकते हो, एसीसी स्टडी हब में जाके आप रीड कर सकते हो। जो एग्जाम किट के क्वेश्चन और आंसर्स है वो उस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इंग्लिश तो आप डायरेक्टली भी खुद से एक बार देख सकते हो, लेकिन जब समझाऊंगा ना मैं,
तो आपको अच्छे खासे रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आपको दे पाऊंगा थ्रू हिंदी। ठीक है, हिंदी में आपको मेरे को समझाने में ज्यादा आसानी रहेगी। ठीक है। ओके, सो दिस वाज इट। थैंक यू, एंड वी वुड गेट बैक अगेन विद द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू वेरी मच।